अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके आया हूँ अपनी जॉब पर और अभी सुबह का वक्त है। मैं जॉब पर आ गया हूँ और अभी मैं आपको दिखाऊंगा अपना ऑफिस, अपना यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी जो है ये लोकेटेड है सिटी ऑफ सरी में और इसका नाम है साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की ख़ास बात ये है कि ये यूनिवर्सिटी का सेकंड कैंपस है और यहाँ पर लोअर मेनलैंड में लोकेटेड है। और यहाँ पे बेसिकली एक मॉल है जो कि बेसिकली मेन फ्लोर पर है और उसके ऊपर के जो बाकी 4 फ्लोर हैं उस पर साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट लोकेट हैं। और इसके साथ जो बिल्डिंग है उसका नाम है सेंट्रल सिटी टावर। उस पर बेसिकली फ्रेज़र हेल्थ और दूसरे कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन है, ऑडिटिंग कंपनीज़ हैं और लॉ फर्म्स हैं, उनके ऑफिसेज़ हैं। सो हमारा जो कैंपस है इसमें जो हमारा फ्लोर है वो बेसिकली 4th फ्लोर है और इस स्कूल का नाम है स्कूल ऑफ मैकेट्रॉनिक्स सिस्टम्स इंजीनियरिंग। ये बेसिकली अप्लाइड साइंस के अंदर आता है। और within applied science there are different schools like there's an engineering school, there's like computing science, and then there's mechatronics, and then there is also one new department which is called sustainable energy. So I worked almost 10 years in Simon Fraser University for the School of Mechatronics in different roles. बात यह है कि स्कूल ऑफ मैकेट्रॉनिक्स की अच्छी बात यह है कि यहाँ बेसिकली इट्स अ 5 ईयर प्रोग्राम। सो जिसमें 4 ईयर्स आपकी एजुकेशन है एंड मैंडेटरी 1 ईयर को-ऑप है, जिसके बाद देयर इज़ अ गारंटेड यू आर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस पर्सन एंड यू वुड डेफिनेटली हैव अ गुड जॉब मार्केट। सो इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ अपना ऑफिस, ये चेक करें। सो आई हैव लॉट्स ऑफ मेमोरीज एट दिस प्लेस एंड आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन हियर। So feeling sad but happy at the same time। ये आप जो देख रहे हैं इसका कुछ दिन में मैंने डेमोन्स्ट्रेशन देनी है द स्कूल इन BCIT। सो ये मैंने अपना प्रोटोटाइप है जो मैंने बनाया है राइट फॉर द लीन मैन्युफैक्चरिंग, और इसकी भी मैं कुछ तस्वीर वगैरह लगा दूंगा so you can see it। One of the job that I used to do it in here is like 3D printing. So I use the CAD software, design software, draw 3D stuff, and basically then use a 3D printer to print it. Another thing I used to do is like machining. So I do manual machining, and then this is like a CNC machining. So this is one of the part that you can machine it on a CNC machine. And here I have some examples of like 3D printed parts। 3D प्रिंटर पे जब आप पार्ट प्रिंट करते हैं तो वो अंदर से इस तरह का उसमें स्ट्रक्चर आता है। डिपेंड्स ऑन द प्रिंटर, आप उसकी प्रॉपर्टीज़ पिक कर सकते हैं एंड यू कैन असाइन इट राइट। मैनुअल मशीनिंग में आप इस तरह के पार्ट्स बना सकते हैं राइट। सो एंड अगेन 3D प्रिंटर का ये है कमाल कि आप बेसिकली एनी शेप, एनी फॉर्म ऑफ शेप दैट यू कैन, आपका प्रिंटर जिस स्पेसिफिकेशन मीट करता है तो आप प्रिंट कर सकते हैं right। And that bike is basically printed on a 3D printer। This is something I designed right, like this is like a teaching lab learning apparatus। so ये मैंने डिज़ाइन करा है यहाँ पर। इसमें आप बेसिकली टेबल टेनिस की जो बॉल होती है राइट, आप उसको वो इस सिलेंडर में आप फ्लो कर सकते हैं एंड कंट्रोल विद द एयर मास फ्लो सेंसर। सो ये है। एंड अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मशीन शॉप एंड आई विल शो यू। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू द मशीन शॉप। सो लेट्स हेड डाउन टू द मशीन शॉप। इस वक्त ऑलमोस्ट 10 बजने वाले। सो आई थिंक 10 बज गए हैं बिकॉज अदरवाइज़ ये मॉल नीचे जो है वो ओपन नहीं होता। सो आप देख सकते हैं द मॉल इज़ ओपन। आई विल आल्सो शो यू द मॉल and I'm heading down। So they also have a library here right, and university jo campus is basically a public institute right, so anybody can come and go here right, but apparently yeah it's very secure and यहाँ पे security and they can see you all the time what you're doing what not।
So other thing I'll show you, they have like on the other side a gaming area. अभी इन्होंने establish कर दिया है और काफ़ी टाइम से यहाँ पे फूटबॉल टेबल वगैरह पड़ी रहती थी, बट ये कि ना अब ये टेबल टेनिस भी ले आए, so that's good. So 4th floor. So Simon Fraser के basically 3 campuses हैं. पहले हमारा ये space था, now we have moved to the other side. I used to have a window office as well, जहाँ से मैं parking lot में देख सकता था, but I don't have that anymore and I'm into another office. But now I'm leaving. So अभी मैं जा रहा हूँ 3rd floor पे. वो चेयर आप देख रहे हैं सामने रेड कलर की, I think that has been donated by real estate corporation. So I'm gonna head down here. This is 3rd floor. We have a lab on the 3rd floor. So recently I think they have opened one space which is called innovation space. So this is SFU, and there we have Blends Coffee, we have security desk, and I'm heading actually downstairs to the machine shop. So this actually only goes down. If you want to go tower, it's other side. It's right here. These elevators. Yeah. So ये बड़ा specific location पे है हमारी machine shop. This is basically at the basement level, but I think this is something new. We're BD School of Business, SFU, and on this side we have like executive parking. Then we have this machine shop. So what do we do at machine shop, right? So machine shop is basically supports the teaching and research at the school mainly, and then within Simon Fraser University, different schools, they can use the services here. So at the machine shop, we have basically like the raw stock, we have the material, we have some bending equipment, we have the cutting equipment, which is like a horizontal saw to cut any metal. Then we have a vertical saw to cut any wood, acrylic, plastic. Another saw we have in here, right? Roll and saw. We have a machine. Then we have basically a milling machine, a mill machine, a toolbox, right? Measurement station. Again, for safety, we have phone, we have earplugs, we have safety goggles, you know, we have fire extinguisher, we have a sink, water sink, we have a first aid kit, we have some manual lathe machines, we have drill press, we have a lathe machine, CNC, then we have a CNC mill machine, we have some 3D printers, and on the back side we have a research facility. So we have these here, 3D printer, right? And we also have like a laser scanner in here. This is our prototyping room for 3D design and 3D printing. This is like a washer. We have a 3D printer, new F170, CMM machine for measurements. So again, I mean, इस facility में what I did a lot of machining projects, you know, I did a lot of design work, and I did like lots of teaching. So I used to teach here basics of machine tool course, जिसमें in class lectures and hands on experience हम students को यहाँ पे देते थे in the machine shop.
and then I'd also teach I used to teach like basics of CNC. So उसमें यही था कि basically आप G codes, you know, and then G codes के साथ आप ये कि we used to work on master camp with the students कि भाई how to program the part and how to machine a part. So earlier जो मैंने आपको जो gear part दिखाया था, we machined that on this fixture. So अगर हम CNC का मतलब यही है कि आप इस पे एक part बनाएं and then you can do like as many as you want, million parts, right? So fastest method है और quickest है, और इसमें ये है कि quality work आपको मिल सकता है, ठीक है ना. So basics of machine tool, basics of CNC and rapid prototyping जो कि basically आपका involve होता है उसमें 3D work like 3D design and use of equipment like 3D printers and use of a bit of information on the course is about manufacturing methods, right? So ये एक है इस lab में in particular. This is what we used to do, and again lots of memories I have, lots of good friends I have made here at SFU, and there used to be a good friend of mine here, you know, at this office, and now he works at BCIT. So he's from Pakistan as well. So he's a lecturer, he's basically a instructor over there at, you know, he's a Red Seal machinist. So very cool stuff. Again, अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो कनाडा आप कहीं से भी आ रहे हैं, any country you're coming from, so by all means, if you have experience in manufacturing, if you have experience in operating these machines, you know, any of these machines is going to be essential, is going to be helpful in your journey, you know, in Canada. यानी यहाँ पे अगर आप आते हैं अपना पाकिस्तान से अगर आप आते हैं और आपका इस तरह का एक्सपीरियंस है इन मेटल वर्किंग एंड मशीनिंग, तो यहाँ पे आके आपके इसमें फ़र्दर ट्रेनिंग लेके आप यहाँ पे इजीली जॉब कर सकते हैं. या तो आप इन पे मशीनों पे यहाँ पे आके काम सीख कर और अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ विद टाइम, राइट, अपने आप को थोड़ा इस्टेब्लिश करने के बाद आप अपना यहाँ पे बिज़नेस वगैरह रन कर सकते हैं in manufacturing, in metal machining industry. So I hope you guys going to like this video. And आज का जैसे कि मैंने आपको दिन बताया कि what I have to do, that I'll go to the mall and I will show you some clips of mall as well कि भाई mall कैसा है. And the main store they have is here is like Walmart and Best Buy. They have a gym, they have doctor's clinic, they have a dental clinic, they have Tim Hortons, you name it, right? So यहाँ पे बहुत सारा fun है, especially Simon Fraser University के इस campus पर जो कि lower mainland सरी में located है. And now across the street SFU की basically new building इन्होंने establish कर ली है, which is called which is for a new program called sustainable energy. So sustainable energy is called like C, उस बिल्डिंग को सी कहते हैं. और बेसिकली बात ये है कि SFU was renting a place right here at the Surrey, but now जैसे कि यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, so they are still renting the place in here in Central City Tower as Surrey Central, but they also have their own building across, right? So where they are teaching a new program, and उसके साथ साथ they gonna bring I think soon a medical school here. So Surrey is amazing, Lower Mainland is beautiful, और यहाँ पे बहुत स्कोप है. एंड दे से द फ्यूचर लिव इन सरी. एंड यहाँ पे पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है इस एरिया में, स्पेशली अगर मैं सरी की बात करूँ इन वैंकूवर. तो आई विल सी इफ़ आई कैन लाइक लेटर someday go to like SFU Burnaby campus and make a full video over there as well and show you that what we have. But it's all depends on the interest that you guys have, you know, my audience going to propose. So by all means, I hope आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे and you're gonna enjoy the journey with me. And अगर आपको कोई भी question हो in terms of engineering scope in Canada and you know कि किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन अप्लाई करें and you know what how are the jobs, you know किस तरह की jobs यहाँ पे available हैं और in which area there are more jobs, you know, how to look for jobs and
हायरिंग प्रोसेस वर्क्स, राइट. सो ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस, आई हैव द नॉलेज, and I have the interest, right? So soon I'm gonna go to a new school, so I'm gonna talk about that as well. But apna khayal rakhein. Thank you. Like, share, and subscribe, please, and have a good day. Take care, all. Allah Hafiz. Hi guys, so इस वक्त आप देख सकते हैं some of the prototypes which I have worked on in terms of design and manufacturing and fabrication. So in terms of metal manufacturing, you can see parts and 3D printed parts. कनाडा में मौसम काफ़ी चेंज हो गया है and snowing.